Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Almighty Allah, who is the most Rahman and Rahim and the supreme authority of this universe. All my dear students, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. As you know that in our previous class we covered the Unit 1 Lesson 5, and today onwards we are going to talk about the grammar topic that is all about the tenses. First of all, we all have the information that tense word is derived from the Latin word tempus, which means time. And we know that time has three types: present, past and future. टाइम के कितने मतलब इकसाम होते हैं? तीन इकसाम होते हैं. एक होता है present, दूसरा past and future. But today onwards we are going to talk about present indefinite tense. First of all, we are going to cover the definition of present indefinite tense. Then we are moving towards the helping verbs, construction, and how the affirmative, negative and interrogative sentences are made. So the definition of present indefinite tense is a verb that refers to current time is called present or present indefinite tense. ऐसा verb जो current time को मतलब show कर रहा हो, refer कर रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? present indefinite tense. And we know that helping verbs of present indefinite tense are do and does, and the construction on which complete sentences are made are subject, main verb and object. As I have written on the page that affirmative sentence is made by the different construction, negative sentence is made by the different construction. We are just changing the helping verbs of the sentences. First of all, if we look at the construction of sentence, first of all we will put the subject like I, we, he, she, it and they or any name, and then we are moving towards the helping verbs. जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, पहले हम सब्जेक्ट ऐड करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो हमारा सब्जेक्ट कौन से आते हैं? जैसे हमारा आई आ गया, फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू एंड यू, ही, शी, इट, दे. तो पहले हमने सब्जेक्ट ऐड किया, उसके बाद मेन वर्ब आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, जैसे प्ले हो गया, रीड हो गया, राइट एंड सो ऑन, एंड देन एट लास्ट यू विल पुट द ऑब्जेक्ट. तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होता है? जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस लाइक आई प्ले गेम. नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आप उसमें डू नॉट लगाएंगे, बिकॉज जो फर्स्ट पर्सन होते हैं लाइक आई वी दे, आई वी, और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, दे, एंड सेकंड पर्सन यू एंड यू. ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट्स जो रिमेंबर आपको ये पॉइंट्स याद करनी है कि जब भी थर्ड पर्सन आएगा, ही, शी, इट और एनी नेम, यू विल पुट एस विद द अफर्मेटिव सेंटेंसेस. ठीक है. सो आई हैव रिटन सम ऑफ द एग्जांपल्स लाइक अगर आई आएगा तो आप ईट मील लगाएंगे. इफ़ यू आर मेकिंग द सेंटेंस विद द थर्ड पर्सन लाइक ही, शी, इट, देन यू विल ऐड द एस विद द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस. ठीक है बेटा. सो द होमवर्क फॉर यू पीपल is make any 10 sentences of present indefinite tense but with the different subjects. ठीक है बेटा. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर. एंड दिस इज़ आल्सो द फेयर वर्क. ये आपकी ग्रामर पोर्शन जो होगा उसमें आप ये फेयर वर्क करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एंड यू विल फेयर योर वर्क विद द प्रॉपर तरीके से आप फेयर वर्क करेंगे, मार्जिन लाइन लगाएंगे, एंड यू विल यूज़ द ब्लैक पेन एंड आल्सो ब्लू पेन एंड ब्लैक पेन. ठीक है बेटा. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.